ऑफ कोर्स अब तो बुलंद हो गए, अच्छा स्टार्ट किस तरह आगे के मैचेस में ऊपर फिर अपना पर्सनल थोड़ा बताया कि टॉप प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना ये कितना लर्निंग एक्सपीरियंस है. यू हैव लाइक्स ऑफ जेफ कॉर्नर, जेम वेन और दीगर टॉप प्लेयर्स, कितना इससे लर्निंग हासिल होती है? जी बिल्कुल. जो पहला मैच होता है किसी भी इवेंट का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो एक मोराल सेट करता है और एक टोन सेट करता है पूरे टूर्नामेंट की. और जिस तरह का आज मैच हुआ है तो इससे हमारा जो मोराल है टीम का और जो एक टोन सेट हुई है और एक स्टैंडर्ड सेट की है हमने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. और जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हमारी टीम में हैं, डेविड वार्नर, जेम्स वेन, टिम साइफर्ड, इनसे बहुत हेल्प मिलती है और एक मोटिवेशन मिलती है इनको देख के जब इनके साथ नेट में प्रैक्टिस करते हैं और जब मैच खेलते हैं, तो एक हमें हेल्प मिलती है एज अ यंगस्टर और हमें इनका बहुत फ़ायदा है. जी सर. अरफात, हमने देखा कि शुरू से ही कराची टीम के जो बैटर्स थे वो कॉन्स्टेंटली हिट के लिए जा रहे थे. मतलब प्रेशर नहीं ऐसा लग रहा था कि उनके खाए थे बड़े टोटल का. तो मैसेजिंग क्या थी ड्रेसिंग रूम में, किस तरीके से आप लोगों ने सोचा था कि आप लोग अप्रोच करेंगे इस तरह के टारगेट को, क्योंकि उससे पहले तो प्रेशर होगा अच्छा. जिस तरह ये हाई स्कोरिंग गेम होती है इसमें आपको हाई रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ती है और इसमें आपको खौफ नहीं होता फेलियर का, क्योंकि अगर हम इस खौफ के बगैर खेलेंगे तो आपने जैसे आज देखा कि जिस तरह की हम लोगों ने क्रिकेट खेली और मॉडर्न डे क्रिकेट जो है वो इसी तरह है. तो आप अगर हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, हम लोगों ने सिंपल प्लान रखा कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की उसी तरह हम बैटिंग करें और हम लोगों को उसमें फ़ायदा हुआ. पिछले साल आपकी टीम में नवाज भी थे, उस तरीके से आपको चांसेस नहीं मिले. अब ऐसा लगता है कि आपको प्रॉपर ही रन मिलेगा. हम लेफ्ट आर्म जो स्पिनर होता है उसकी बॉलिंग तो इम्पैक्टफुल होती है, वो चाहिए थी टीम को, लेकिन बैटिंग भी आजकल अगर दुनिया क्रिकेट में देखें तो उस पर पर्टिकुलरली कितना फोकस है आपका, क्योंकि लीग क्रिकेट है आगे आपके हवाले से आप वो 2-4 प्लेयर्स में शामिल हैं जिनकी बात होती है कि पाकिस्तान के बहुत जल्द नजर आएंगे खेलते हुए. जी बिल्कुल. इस साल जिस तरह मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट कर रही है और जो मेरा रोल डिफाइन किया गया है उस हिसाब से मुझे एक अच्छा मौका मिलेगा और मैं चाहूँगा कि जहाँ पे भी मुझे चांस मिलता है तो मैं उस चांस को अवेल करूँ और अपनी ऑल राउंड स्ट्रेंथ को इम्प्रोवाइज करूँ और अपनी टीम को फ़ायदा दूँ. तो इसलिए मेरा जो रोल है वो मुझे डिफाइन कर दिया गया है. तो आई होप कि मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट दूँ. कराची किंग्स ने रन ज़्यादा दे दिए या पिच के मुताबिक ये ठीक रन बने हैं, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा आपने रन दे दिए, मिस फील्डिंग कुछ हुई है, बॉलिंग कुछ खराब? बिल्कुल मिस फील्डिंग हुई है, लेकिन अगर जिस तरह पिच खेल रहा था और जिस तरह हम लोगों ने बैटिंग की है तो मेरे हिसाब से जेम्स विंस को एप्रिसिएशन देनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है आज और साथ खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बैटिंग की है. मिस फील्डिंग ये तो पार्ट ऑफ गेम है और आप एक्स्ट्राज भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम दोनों टीम्स की तरफ से देखें तो दोनों टीम्स की तरफ से बैटिंग भी अच्छी हुई है. तो उन दोनों की बैटिंग की वजह से ये इतना अच्छा टोटल बना है. तो वैसे ये हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे 200 के आसपास. आगे आने वाले मैचेस में हम कोशिश करेंगे कि जो गलतियां हुई हैं वो ना दोहराएं. अच्छा अरफात, आप और मुझे दोनों ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर किए जाते हैं. कराची कोई प्रॉपर स्पिनर नहीं खिला रहा, तो इस हवाले से कोई आपको मैनेजमेंट ने रोल दिया है कि आप दोनों ही प्रॉपर स्पिन करेंगे और आप लोगों का ये रोल होगा? जी बिल्कुल, मैं एज अ प्रॉपर स्पिनर खेल रहा हूँ और अगर मैं ऑलराउंडर कहलाया जाता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एज अ प्रॉपर स्पिनर नहीं खेल रहा. मैं फ्रंट लाइन स्पिनर हूँ टीम में और मेरा रोल जो है वो बेसिकली एज अ प्रॉपर स्पिनर है. अनफॉर्चुनेटली आज पूरे ओवर नहीं कर सका, लेकिन आगे आने वाले मैचेस में एज अ फ्रंट लाइन स्पिनर ही खेलूंगा और साथ खुशदिल भाई जो हैं वो भी फ्रंट एज अ प्रॉपर स्पिनर खेल रहे हैं और उन्होंने भी आज अच्छी बॉलिंग की है. तो आप इस चीज़ को ये नहीं कह सकते कि हम एज अ ऑलराउंडर हैं तो हमें एक प्रॉपर स्पिनर खिलाना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको ऑलराउंडर ज़्यादा चाहिए होते हैं एक टीम में, क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं एज अ प्रॉपर स्पिनर. थैंक यू. What do you think, in fact, I just want you to tell that how difficult was bowling to Vince and faster, and especially Khushdil Shah tonight for you, because he was kind of taking on your spin bowling. Yeah, they obviously played really well, and Yes. yeah, they played really well and put the bowlers under immense amount of pressure, and it was tough to defend out there. But we still felt like we had pretty good plans, and sometimes the better can execute on their plans better than what you can as a bowler. So look, that's the game of cricket. I think it was a fantastic game. Lots of runs scored,
yeah, it was a yeah, I guess a good advertisement for 2020 cricket. Bracewell, do you think, looking at this pitch, you guys were some runs short? If you compare the centuries of Rizwan and Vince, the intent which Vince showed in comparison with Rizwan, do you think he must have played a little bit faster to add some 20-25 runs more into the team's total? I think we were really happy with our total at the half time. It's the difficult thing of batting first, is you never quite know what a really good score on the wicket is. I think we felt like we were really in the game and had a great score on the board. So you're always trying to assess as a batting unit in the first innings, and I think, yeah, in hindsight you want to look at ways that you can get better, and I'm sure every one of our batters will be looking at themselves and figuring out how we can get maybe 10 or 15 runs more, but that's very much a hindsight thing, I think. When you score 230 odd in a 2020 game, you expect to be there or thereabouts, and we were. And it took an exceptional innings from Vince, and then obviously the way that Crystal batted as well. Seifert at the top, they came really hard at us, and it is hard to defend here in Karachi. So yeah, I think sometimes you just have to take your hat off to the batting side, batting second, and they took the game on really well. So yeah, I don't think it's something that we'll be looking too much into as a batting unit. Yes. That's what lots of extras given by your team, Sultan. Do you think this is the turning point, around 30 runs you are given in extras? Yeah, obviously when you give away that amount of extras, you want to tidy that up. In the first game of the season, sometimes guys are a little bit rusty and things like that. But yeah, that's something that we were working on, just trying to tidy up that area. But yeah, as I said, I think the way that they batted was pretty outstanding, and it was some serious hitting from both sides. But unfortunately, they came out on top. Bracewell, what do you think? Did you turn out to be one of the major reasons of your defeat? Yeah, there was a little bit of dew out there. You sort of you expect that in the second innings, particularly over here. So I don't think we were unprepared for it. It's just one of those things that you have to be really good at, and it does make it a little bit harder to execute as a bowling unit. But yeah, I think I would say that the way that they played, they took the game away from us. They came out really with great intent, Seifert at the top, and put us under a lot of pressure. And I think, yeah, you want to you keep finding ways to take wickets, and we weren't able to do that through the middle, which made it very tough at the end. Michael, you have been PSL, you played Champions Trophy, captain New Zealand in T20 and ODIs, and after the PSL you played a lot of franchise cricket in this year, and MLC in the 100. So talk us through your journey, especially the way you are managing your workload between international and franchises, and talk us through your coming events, especially the franchise event. Yeah, it's an exciting time to be playing. There's a lot of cricket going on around the world, and after the PSL you played a lot of franchise cricket in this year, and MLC in the 100. So talk us through your journey, especially the way you are managing your workload between international and franchises, and talk us through your coming events, especially the franchise event. yeah, it's an exciting time to be playing. There's a lot of cricket going on around the world, and I'm particularly excited to be a part of all of that. I think you do have to manage your workload as a player and try keep nice and fresh, and make sure you stay on top of the little things, making sure that you look after your body and things like that. So yeah, it's a challenge for everyone that's playing all year round. I think it's nothing new for international cricketers to be playing 12 months of the year. So it's an exciting opportunity to play in different leagues around the world and experience different conditions. And I'm certainly looking forward to the rest of the PSL. Last question. Michael, tell me about the condition of the pitch, because we have seen some grass out there on this wicket, but Multan Sultan haven't utilized that in the bowling innings in the power play. So talk us through about that, and
Where do you think went wrong for Multan Sultan in the middle overs, 7 to 15 overs with the ball in hand? Because you have given away too many runs. 2 times we have seen 3 sixes hit in an over. Yeah, I think it was certainly a different wicket to what I've seen here before in Karachi, a lot more grass on it, so we weren't exactly sure how it was going to play. And I think, look, when 230 runs is chased down, I think there's a lot of bowlers that in both sides that are searching for ways to take wickets and perhaps stop the flow of runs. It wasn't just our bowlers that struggled out there today. So yeah, it's one of those things you need to keep looking at ways that you can improve, but also take it for what it is. It was a very high scoring game and both teams struggled to take wickets. So I think we took more wickets than them anyway. So yeah, everyone's looking for those fine margins on how you can improve. But look, we don't want to look too much into it. We've got a great team, and yeah, as long as we're trying to slightly improve every day, then we're going to be putting ourselves in place to win a lot of games. Thank you very much, and all the best for the remaining games in Karachi. Thank you, guys.